Assalamualaikum. I'm Seher from Saqafati Safarnama, and this is our podcast where we will be talking about the cultural sensitivity in tourism for Gilgit Baltistan. आज हमारे साथ हैं Seher. So I want you to please introduce your ties to Gilgit Baltistan. Hello, I am Seher Ibrahim and I am from Gilgit. I'm from Gilgit basically. And yeah. ये किधर area है and what's the It's a specialty about district. it? It's a district in Gilgit Baltistan and it's not very well known because it's not popularly famous as Hunza. So Okay, so since it's not that famous, I am guessing you do not have a lot of tourists there. we do have tourists, but not as many as in Hunza because we lack a lot of infrastructure and other resources. Okay, so जो the area that you're from and in general, वहाँ की tell me about the culture कि religiously predominantly कैसा है and you know the famous things that happen food wise and everything that you know about. So you asked me 3 questions in one go. So the first thing you asked was religiously predominantly. So I think Gizar में जहाँ से मैं हूँ predominantly we are there are I think majority is Shia Imami Ismailis and then there are other sects as well, but they are in minorities in Gizar specifically. And then about culture, I think it's pretty much same all over Gilgit Baltistan, but we have a lot of languages we speak in Gizar. We have like 5 languages, I believe. We have Kwar, British Kishina, and then Waki, and yeah, that's how many I remember. That's yeah. That's In one district. In one district, yeah. Wow. So we have a lot of diversity when it comes to language. Yeah, that's very obvious. So moving on to the culture. अब जब लोगों का interaction होता है, before we move on to tourist, I want to ask you, obviously people have their differences. Obviously, if one person is speaking Waki and one person is speaking Shina, so how do people interact and how do people deal with the cultural differences वहाँ पे? So I think if you are from the same region ना, you have a lot of commonalities as well. मतलब आपके जो cultural basics होती हैं, etiquettes होती हैं या फिर greeting वाले थोड़े से, तो वो सारी चीज़ें आप में फिर भी common होती है. बेशक you speak different language, you're living in a different area in the Gezer, but if you are from Gezer and if you're meeting another Gilgiti, you will meet in a similar way, like you're meeting your family member. Okay. बहुत ऐसे wholeheartedly आप मिलते हो. So that's part of their culture. And within Gilgit, I do not think that's an issue कि आपको cultural interaction कैसे होता है because I know there are differences जैसे language है, maybe food at times, but there are a lot of commonalities. Do you have a favorite food, especially घर जाके? Yeah, I love like desi food a lot. कौन सी कोई एक dish that stands out? From Gizar, I really like pulai. Okay. If you know, you won't know because it's. I mean, ancient. I can know if you bring it. I cannot actually explain it, but I don't know if anybody here knows. Yeah. Okay, ठीक है. So now moving on to the fact that obviously Gilgit Baltistan, we know at this point in Pakistan is a hub for tourism, which is great. We're like, it's expanding, everything is mushrooming, new infrastructure, like industries, everyone is taking it seriously. ठीक है ना? And जो उसकी तरफ हम grad trips की बात करते हैं, first thing that comes up in our head is के oh hunsa चलते हैं, Skirtu चलते हैं and everything. ठीक है, as good as that it is for our country, it obviously has some, detrimental effects on the community. Yeah. Okay, so what do you think is generally the perception of people? Like, obviously, you're living in Islamabad as well, and many I'm like, my background is from Kashmir, ठीक है ना? And we're like, I've lived here my whole life. So people have a very different perception of people वहाँ पे. So what have you noticed कि लोग किस तरह से perceive करते हैं गिलगित को? लोग गिलगित को किस तरह से perceive करते हैं? So I believe जो हमारे tourist होते हैं ना, when they go to Gilgit, since I've lived in Hunza as well, which is hub of tourism in Gilgit. I have done my college from Hunza, so I've lived there for 2 years. So I have that experience कि जब लोग यहाँ से आते हैं ना, first thing first, they do not I think they should be very sensitive about the culture, what they're wearing, what they're doing, their behaviors and everything. But they don't do that very often. Like you would go there, you would see a lot of people avoiding their own culture. मतलब we have a very decent culture of wearing shalwar kameez everywhere. ठीक है, तो wearing very western dresses in Gilgit is culturally insensitive, especially आप अगर मैं अपने point of view से देखूं, because they say wherever you go you act like them, right? जैसा So देश जैसे वैसा I भेष. am living in Islamabad, so I do act like them, like I do take care of their culture as well. But when I go back to Gilgit,
I am a proper Gilgite. Like I wear completely Eastern and whatever things I believe are acceptable and in Gilgit. So I've seen this very often कि आप लोग वहाँ पे जाते हैं and then they do not take care of this first and then they also like you must have seen a lot of videos circulating in social media people लोगों के खेतों में जाते हैं और उनके दरख्त तोड़ते हैं फ्रूट्स के लिए and everything हाँ. like they say कि गिलगित के लोग बहुत अच्छे होते हैं बहुत वेलकमिंग होते हैं अगर वो अच्छे होते हैं तो you do not have to take benefit of it right you also have to need to set some boundaries have to respect them ask them before if you are कोई फ्रूट आप उठा रहे हो कहीं जा रहे हो किसी खेत में गुजर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आई हैव सीन पीपल टेकिंग पिक्चर्स विदाउट कंसेंट राइट तो you need to take the consent of them because they are people they are not just your subjects कि आप pictures लो and then go flaunt it on your social medias कि oh I've done this picture no you don't have to do that they are people they have lives they have their own concerns they have their privacy so I think tourist needs to realize this कि आप उन चीज़ों का आप you have to keep them in mind while you are traveling to Gilgit. Of course. I mean, it's a comparison that comes in my head कि अगर कोई there's like a white person in Pakistan, कोई आ रहे हैं कोई US से UK से आ रहे हैं and everything, and they're going around in Pakistan में different तरह से, in a way that we do not find very comfortable, ठीक है? yeah. So we get very offended. But वही चीज़ we do not apply to the north, especially Yeah. Gilgit वगैरह, because we just believe के people are not gonna mind or it's not that important. Yeah. ठीक है? But it obviously is. कि ठीक है, people obviously you're spending your money and you're going there. You wanna have fun, but fun doesn't have to come at the expense of the comfortability of the other person, That's very of course. true. ठीक है? And the point is to not make them uncomfortable. ठीक है of course अब इसके अंदर हमारे पास फिर वही बहस आ जाती है कि हम अपना ख्याल करें या कि वहाँ पे दूसरों का ख्याल करें तो what do you think are the basic चीज़ें हैं जो लोग बस कर सकते हैं और वो it wouldn't harm anyone in fact would make their experience better. It's not like कि आप कहीं जा रहे हो तो आप उनका अगर कल्चर का ख्याल रखोगे तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे या समथिंग you are going there for the natural आप नेचर के लिए जाते हो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हो कि पहाड़ों में like how are people living or and everything so आपके जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं ना वो आपको उस एक्सपीरियंस को कम नहीं करते हैं ठीक है हाउ यू टॉक टू समवन हाउ यू आर इफ़ यू आर टेकिंग पिक्चर आप उनसे इजाज़त लोगे तो इससे आपके मज़े कम नहीं होंगे या आपका एक्सपीरियंस बुरा नहीं होगा ठीक है आई हैव सीन पीपल लिटरिंग ऑन रोड्स इन हुंजा स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अपने घर में तो कोई ऐसे नहीं करेगा आई वाज डूइंग कॉलेज और हम लोगों का नहीं कल्चर है लिटर करने का यू गो इन हुंजा यू सी कि हुंजा लाइक कहीं पे भी गिलगित में जिस तरह से यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडीज में या सिटीज़ में लिटरिंग होती है रोड्स पे वो इट्स नॉट कॉमन इन गिलगित एंड इफ़ यू आर गोइंग इनटू अ माउंटेन और आप गाड़ी से बाहर ऐसे कचरे फेंक रहे हो दैट शोज अ लॉट अबाउट योर एटिकेट्स राइट दैट्स नॉट लाइक कि उससे आपका कोई उन लोगों का आपका कोई एक्सपीरियंस ख़राब होगा कि आप वो लिटर ना करो अंदर रखो बाद में ले जाकर कहीं और डिस्पोज ऑफ करो दैट डजंट अफेक्ट योर experiences such so I believe कि उस चीज़ पे there is no say कि उनका ख्याल रखेंगे तो हमारे restrictions होंगे no that doesn't happen आपको you just have to show very basic manners there कि आप किसी की तस्वीर ले रहे हो आप पहले पूछो you must have seen people going into लोगों के घर और फिर उसको रिकॉर्ड करना कि that's how people are living in Gilgit so I'm sure they must be taking consent I'm sure लेकिन a lot of times they don't मतलब अगर एक बंदे ने consent लेके किया है तो दूसरा बंदा दूर से वैसे ही कर ले I remember when we were in college we used to get really uncomfortable जब हम टूरिस्ट साइट पे देखते थे और हम उनके कैमरे हमारी तरफ होते थे like maybe our facial features are different and maybe you are आपको बड़े अच्छे लगे हो आपको बड़े intrigue किया हो but you still don't have to take my picture like that like come on ask me आके मुझसे पूछ लो if I'm comfortable or not and back then I was not like मैं बहुत conscious होती थी कि why would somebody be और वो जो zoomed lenses होते हैं वो लेके आ रहे होते हैं and then because people are not very well aware there मतलब वो उनको नहीं पता होता कि इतना zoomed lens है तो कहाँ से कहाँ तक की coverage हो सकती है कुछ भी तो लोग बहुत conscious हो जाते हैं इस चीज़ से and फिर obviously लोगों के भी behaviors आपकी तरफ change होंगे और सिर्फ एक टूरिस्ट आके ये करता है तो फिर दूसरे जो टूरिस्ट आएंगे उनकी तरफ भी आपका behavior लोगों का behavior change होगा so you don't expect them कि वो उन्होंने हमारे साथ ये किया and everything because you are doing the same to them. Yeah. So I mean we've talked about the differences. What do you think are like there've been things that have been common that people can take care of जहाँ पे for instance यहाँ पे कि इस्लामाबाद में भी लोगों का behavior इस चीज़ के बारे में इस तरह से है तो गिलगित में भी लोग जो है इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं because हमारे माइंड में गिलगित is very conservative
like, you know, that's how it's perceived, right? Because हम नॉर्थ के बारे में जब ये सोचते हैं तो हमारे माइंड में बहुत कंजर्वेटिव आता है. So is it as conservative as people make it out to be? It's actually the opposite, I would say, because I am from Gilgit and I've been living in hostels ever since 2013. 2013. Okay, so it's been almost 11 years, okay, and I have moved out of home when I was 13 years. Because obviously you go after opportunities. आप बच्चे colleges के लिए जाते हो. मैंने school भी अपना 7th grade के बाद school भी मैंने hostel में रह के किया, and then college in Hunza, and then university here in Islamabad. सो मुझे नहीं लगता कि जितना मेरे यहाँ के अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस है, मेरा सर्कल है, उनके पेरेंट्स आर स्टिल वेरी यू नो रिलक्टेंट अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स ऑफ. लाइक अभी भी मास्टर्स के लिए इवन इफ दे आर मूविंग अवे, तो फिर उनके पेरेंट्स अभी भी इतने रिलक्टेंट होते हैं, ठीक है. दे विल आस्क एवरी नाउ एंड देन कि किधर हो, क्या कर, एंड एवरीथिंग. माय फादर डजंट डू दैट. इट्स नॉट बिकॉज ही डजंट केयर, इट्स बिकॉज ही ट्रस्ट मी विद एवरीथिंग. लाइक ही वुड नो इफ आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, मैं उनको कॉल करके बताऊंगी अब्बू मैं इधर जा रही हूँ. इट्स नॉट लाइक मैं जाऊँ अब्बू, ठीक है. एंड ही वुड ऑलवेज से कि अच्छा ठीक है बस अपना ख्याल रखना है, बिकॉज ही नोज कि आई एम नॉट गोना लाई. ही नोज कि ही हैज़ पुट दैट फेथ इन मी एंड देन I have never, you know, done something wrong. So I think it's the opposite way, क्योंकि conservative तो बिल्कुल भी नहीं है. They're very simple people, ठीक है, बहुत सादा लोग हैं. They're just living their life. वो किसी को harm नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. So उनको ये, मुझे तो ये लगता है जहाँ तक मेरे parents का है, उनको ये पता ही नहीं कि दुनिया में कितनी negativity exist करती है. Because now that I've grown up, आई रियलाइज इट नाउ कि दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं, जैसे सराउंडिंग में वो रहते हैं, उनके सराउंडिंग में लोग आपकी बेटियों को हार्म नहीं कर सकते. मतलब मेरे गांव में ही वुडंट एक्सपेक्ट कि कोई हमें हार्म करे और एनीथिंग. तो ही इज़ वेरी चिल अबाउट अस, ठीक है, कि दे आर लिविंग, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन एंड एवरीथिंग. बट यहाँ के पेरेंट्स आई थिंक दे आर ईदर टू मच अवेयर, या फिर इनकी सोसाइटी, द कल्चर हियर, जितने क्राइम रेट्स है एंड एवरीथिंग, सो दे आर, you know, comparatively very reluctant about this. So I believe it's the other way around, and I do not think कि आपके जो कपड़ों की साइज है वो आपकी कंजर्वेटिव या लिबरलिज्म बताती है. It's about how you think, it's about the mind. So if we are talking कि गिलगित में कपड़े हाँ दुपट्टा पहनते हैं, लंबे सलवार कमीज पहनते हैं, but that doesn't really mean they are conservative. That's part of their culture. Conservatism is not like that. So yeah, there's a lot of problems. So बहुत सारी चीजें हैं that can be resolved if we educate ourselves. Yeah, that's very true. Because हम लोग, when we were starting off, when we were trying to find, तो I mean, obviously for me, Gilgit Baltistan was like, you know, one big chunk. Yeah. And then I found out कि oh अच्छा, so there's these many regions, these many and languages and festivals and everything, and it was in so much detail, and it was so much detail and so much diversity, mashallah, कि you know, I was glad we chose this, because you know एक वो protective element आ गया था कि you know this actually needs to be protected, ठीक है. Because there were a lot we found out on Facebook and everything कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पे people were minding कि यार ये लोग जब टूरिस्ट आते हैं तो like you know PDA बहुत ज़्यादा है, you know the couples are going there, PDA का बहुत मसला है, ठीक है ना, free mixing बहुत ज़्यादा कर रहे हैं and everything, जो हमारे लिए चीज़ें शायद यहाँ पे वैसे quite frankly वो यहाँ पे भी normalized नहीं है, but we feel like we can get away with it वहाँ पे, not realizing कि it's going to harm the environment even worse वहाँ पे, because they do not like that. That's very true, because मुझे जहाँ पे पहले मुझे भी ये लगता था कि मे बी इन cities it's normal, और cities में ये सब होता है, तो वो यहाँ आते they do not realize कि it's not normal here. But now that I've lived in city for 5 years, I believe कि it's not normal here either. It's not. Like I've lived in Nust for 4 years. I mean exactly. I know how much Nust वाले, you know. You know क्यों सभी आ रहे हैं. It's not only Nust, it's all over. Like cities में it's not normal, but I'm not sure why people make it so common in Gilgit Baltistan when they come there. They make it like, oh, it's normal there, because I'm telling from very personal experience. जब मुझे नहीं था city का experience, मुझे यही लगता था कि उधर बहुत normal होगा. That's why people here are like, you know, so comfortable doing it in public and everything. But it's not normal here either. Yes, so I think so what's the point of doing it there? I think it's probably the fact कि you know वही वाली चीज़ है, वो इतना गैप है, हाँ, वो ऊपर से वो मेंटल गैप इतना ज़्यादा है. वी डू नॉट रिग्रेट विद पीपल फॉर अस देयर लाइक यू नो बैकग्राउंड में लोग हैं दैट वी डू नॉट रियलाइज के वो सब देख रहे हैं, वो सब रजिस्टर कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली दे आर वेरी अनकंफर्टेबल. खैर इसके ऊपर फिर द थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड इज कि इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फैमिलीज, ठीक है, बिकॉज देन पीपल आर रिलक्टेंट कि ओ यहाँ के टूरिस्ट अगर ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, सो शुड वी बी सेंडिंग आवर फैमिलीज वहाँ पे, शुड आवर किड्स बी गोइंग वहाँ पे. सो पीपल डोंट रियली रियलाइज द रिपल इफेक्ट इट हैज़,
you know, कि अभी तो चलो आपने माहौल अजीब किया है, ठीक है ना, but you might be actually resulting in the fact कि कोई बंदा है वो शायद अपनी बेटी को उधर भेजना नहीं चाह रहा होगा कि यार वहाँ के लोग ऐसे हैं. I'm sure there are cases, मतलब maybe आज से 11 साल पहले जितने मेरे parents reluctant नहीं थे या जितने they were okay with us sending away, maybe now they are not, because now they have seen a lot, like in the last 11 years उन्होंने बहुत कुछ देखा है in their surrounding, in the tourism, and also like social media and everything. So now it's like आप में इतना gap नहीं है between cities, like they can sit there and they can see how the life in Islamabad is, right? So I think अब वो शायद इतना okay ना हो, और अगर मैं if I had to go अभी college या फिर अभी मुझे घर से निकलना पड़ता तो वो इतना easy ना होता. मतलब I would still be allowed, I'm sure, but maybe you know circumstances different होते हैं, maybe मेरे पे restrictions लगती हैं या कुछ ना कुछ, ठीक है, because now they have seen this and disturb हो जाते हैं, parents disturb हो जाते हैं when they see something similar around. So yeah, that's definitely happening. Okay, so you know, जब मैं कश्मीर की बात करती हूँ ना, तो कश्मीर में where I live, ठीक है, वहाँ पे obviously when I was a kid, तो there were a lot of practices that people had, like you know, food wise be especially, ठीक है, but now all of that is sort of gone in a way, because अब वहाँ पे भी वही खाने बन रहे होते जो यहाँ पे बन रहे हैं, you know, I'm not looking forward to the same kind of food वहाँ पे. Events पे अब शादियाँ, for instance, कश्मीर में शादियाँ बहुत different होती थी पहले, and now they're very how they're in Islamabad, ठीक है, तो have you noticed कि culture actually pollute होना शुरू हो गया है? That's very true, because गिलगित की जो शादियाँ होती हैं they are very different from those in cities, right? आपके 3 दिन की बहुत बेसिक शादियाँ होती हैं, and the thing that I really like about गिलगित की शादियाँ is कि आप बस कुछ भी साफ कपड़े, नए कपड़े पहन के जाओ, आप लॉन का जोड़ा पहन के जा सकते हो, बस it has to be you know new and clean, ठीक है, that and I love it. मतलब आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपने फैंसी तैयार होना, ये करना है वो ना, कोई आप nobody is gonna talk about. अगर सर्दियाँ आप ऊपर से जैकेट पहन लो, कुछ भी पहन लो, just have to look presentable and साफ, like ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करो, कुछ भी नहीं, ठीक है. बट अभी आई सिट हियर और मैं वीडियोस देखती हूँ ना शादियों की एंड एवरीथिंग, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. इट्स लाइक इस्लामाबाद की तरह लोगों ने फैंसी कपड़े पहनते हैं. देयर इज दिस रेस के मतलब पहनने हैं शादियाँ, आई थिंक सोशल मीडिया के लिए भी पहने, बिकॉज पीपल थिंक कि उनका कल्चर इज inferior, like for some reason I don't know, it's not like I have been in that phase as well, जब मुझे feel हुआ है कि मेरा culture is maybe inferior so I have to act like them, but I've gotten out of that phase as well, because I think every culture is different and we have to embrace that. अब recently I was going through a picture जिसमें गिलगित में there were bridal showers happening, गिलगित city में, ठीक है, and I was like bridal showers is not, even in Islamabad, I'm still not settled with the concept of bridal showers, right? So that's happening in Gilgit, and और फिर वो जो पूरा जो culture एक चीज होती है शादियों में, जो culture dances होते हैं, everything is diminished. Why do you have to dance Urdu dances in Gilgit? Because you have your own dances, practices, और वो सारा, it's a very different thing, right? आपके अपने गाने हैं, अपना music है. Please embrace that. They don't do that anymore. आपको गिलगिती शादियों में उर्दू गानों पे dances नजर आएंगे. मतलब I don't really mind because people are enjoying it. But you see where I'm coming from. कि वो इतने subtle changes आ रहे हैं. Subtle changes आ रही हैं, and I'm not okay with that. With it, like. I mean, as you shouldn't be, honestly, because that means that as we're doing one thing, we're probably losing the other thing. And people don't realize that. वो जिस तरह से एक mixture बन रहा है ना, कि I think ये हर region का है. Even when you look in Punjab, I do not think कि bridal shower is a part of your culture. For Punjabis, या फिर आप बहुत सारी ऐसी शादी की I think चीजें हैं. I mean, it's cute, but I still don't understand. अच्छा, for me, I mean, मेरे लिए it's मायूं, you know, कि मायूं रखा जाए, because पंजाब में होता है मायूं रखा जाए and everything, क्योंकि वो होता है लड़कियां बैठती हैं and it's a cute side event and everything. It feels no hate to anyone who's having bridal shower, cute if you want to do it and everything, but it feels very Western to me. ठीक है ना, all these showers and everything, ठीक है, and then I just don't know how you know, that's what the cultures have mixed, कि वो it's a part of a Western culture, mentally but colonized, it is included. वो हम यहाँ पे but ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि
आई डोंट नो पाकिस्तान के जो पंजाब का कल्चर है या जो सिंध का कल्चर है वो भी तो अब गिलगित में ऐसे ही कॉमन हुआ है जैसे वेस्टर्न का कल्चर हमारे पास. हाँ, मतलब exactly. पीपल देयर डू ढोलकीज और मुझे यहाँ जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी मुझे ढोलकी का नाम भी नहीं पता था. आई स्टिल What? डोंट नो. Really? There's not Holga No, Mama? there is no ढोलकी in Gilgit. Wow. So people do ढोलकीज in Gilgit now. तो मुझे मैं जब तक यहाँ नहीं थी तब तक मुझे नहीं पता था कि ढोलकी क्या होती है because we have different वो हमारे different events होते हैं. So that's how it goes. Yeah. That's how it goes. It's very sad. Okay, so hopefully we can raise awareness of the fact that जब भी कोई गिलगित में जाए, they are more respectful. So this is for anyone who's watching कि अगर you're visiting Gilgit, Gilgit Baltistan, any region, any place, make sure you're aware कि आप किधर जा रहे हैं, उधर के लोगों के बारे में, उधर की चीज़ों के बारे में आप जानें. Some background research. Exactly. Yeah. उनकी languages के बारे में, at least जिस season में जा रहे हैं उधर के festivals के बारे में जान Festivals जाएं. के There's a बारे lot में. of things that you can learn about. It will not only enrich your experience, but also give you an understanding of the fact कि वो भी हमारे ही लोग हैं. And we need to respect them and we need to preserve this culture because that is also your home away from your home. Yeah. And that's it for today. Thank you. Thank you. Thank you so much.